and welcome to our special report on the recent earthquake activity in Nepal and India. A devastating earthquake has struck remote western Nepal, leaving more than 100 people dead. The situation on the ground remains dire, with local hospital overwhelmed by the injured and the fear of further quakes keeping people awake at night. Strong tremors were felt not only in the Nepalese capital but also in the neighboring cities, including the Delhi-NCR region. Earlier, on October 3rd, Nepal was hit by a series of quakes, the strongest of which had a magnitude of 6.2. These events triggered tremors in the Delhi-NCR region. So why does this keep happening time and again? To understand this, we need to know that India is situated in a seismically active region. And India is located in a region where the tectonic plates beneath the Earth's surface constantly keep moving. This leads to the accumulation of energy, which is eventually released in the form of earthquakes. And earthquakes are tectonic in origin, meaning they result from the movement of these massive plates. And this poses a significant risk for India. With a growing population and extensive construction work happening all around, the country is highly vulnerable to the devastation that earthquakes can cause. In fact, in the last 15 years, India has experienced 10 major earthquakes, leading to over 20,000 casualties. Delhi is particularly vulnerable as it's located in high-risk zone. Now, experts have an important perspective on these frequent ticks. Let's hear it out from them. We felt those strong vibrations where the epicenter was in Faridabad. If you can just talk to us of these technical aspects of an earthquake, sir. Actually, as you see from this map, the Delhi is very closely situated with respect to the thrust means plate boundary, which is in the north. This red line is actually a the plate boundary. The Indian plate is colliding with the Eurasian plate. Because this collision, there are a lot of earthquakes occurring in this region, from Afghanistan, Hindu Kush to Nepal and northeast India. So Delhi is affected by two types of earthquakes. The earthquakes which are larger magnitude occurring in the along this boundary, like you have felt in the earlier from the we have felt shaking from the Nepal earthquake, Tajikistan earthquake, Afghanistan earthquake recently. Within a few days, 3 or 4 earthquakes occurred with 6.1 to 6.3 magnitude. But Delhi itself has a source, local source. Okay. Delhi falls within the two main fault. This line is Mahindgarh-Dehradun fault, okay, and this is Great Boundary, Rajasthan Great Boundary fault. So Delhi is itself have local source which is generating a smaller magnitude earthquake. So other than the boundary that you are talking about, we have two local sources to fault. हमारे अपने fault lines हैं जिनकी वजह से earthquake आ सकता है. Yes, yes. So हमारा NCS ने क्लोज मॉनिटरिंग के लिए दिल्ली के लिए 2000 में एक क्लोज नेटवर्क इंस्टॉल किया अराउंड 18 to 20 स्टेशन. इस नेटवर्क की वजह से वी हैव एबल टू रिकॉर्ड ए स्मॉलर मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक, जो कि 2 से भी नीचे जिनका मैग्नीट्यूड होता है, जो फेल्ट नहीं होते, बट एक्टिविटीज देयर. सो बेस्ड ऑन दोज डेटा जो आफ्टर द network has established in 2000, so 20 years data, 2000 से 2021 तक, जो recently कोविड टाइम में भी आपने देखा होगा कि स्मॉल अर्थक्वेक आया था. सो 20 years के डेटा सेट के बेस पे हम कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज ईयरली दिल्ली के अंदर भी 30 से 40 अर्थक्वेक आते हैं, जिनका अर्थक्वेक बहुत मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है, 2 या 2 से छोटे होते हैं. एंड एवरी 5 to 6 ईयर इंटरवल पे एक 3 या 4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक भी आता है, बेस्ड ऑन दैट. सो रिसेंटली फरीदाबाद में एक अर्थक्वेक आया था जो 3.1 का था, बट यू कैन सी द इंटेंसिटी इज अराउंड MI3 slight, so it was felt by few people.
who were उतना खतरनाक नहीं था, उतना we can खतरनाक say. नहीं था. Yes, yes. Another thing, sir, you talked about the local fault, but when we talk about this particular region, Hindu Kush region, in fact, I remember how I have reported about these earthquakes. Hindu Kush region में हमेशा हम देखते हैं कि जनरली हमारा होता है कि अफगानिस्तान में कहीं सेंटर होगा. अब कितना खतरनाक वो है, क्योंकि जब हम उस इंटेंसिटी की बात करते हैं तो कई बार 6 होती है, 6 से ज्यादा भी होती है, और हमने देखा है कि किस तरह से 6 इंटेंसिटी वाले अर्थक्वेक जो हैं, किस तरह से नेपाल में हमने तबाही, इनफैक्ट टर्की की जो तबाही है वो सबको याद है. और ये सिर्फ एक झटके तक सीमित नहीं है, उसके आफ्टर शॉक भी आते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं. कितना खतरनाक है इस रीजन के लोगों को के लिए ये सारे अर्थक्वेक, और साथ में जब हम बात करते हैं सीस्मिक जोन 4 में दिल्ली लाई करता है, उस एंगल से अगर हम देखें तो कितना खतरनाक है दिल्ली वासियों के लिए. दिल्ली, जैसा कि हमारा जो सेस्मिक जोनिंग मैप है, बेस्ड ऑन दैट यू कैन सी दिल्ली फॉल्स, दिल्ली और होल सराउंडिंग एरिया फॉल्स इन सिस्मिक जोन 4. Seismic zone 4, when we say this is falls in seismic zone 4, it means that we can expect a peak ground acceleration of 0.246 g. Means it is able to damage in if the structure is not engineered. Means अगर हम कहें कि एक जो आरसीसी स्ट्रक्चर है जो कि आपका नॉर्मल कोड के हिसाब से बना हुआ है, उसको उतना खतरा नहीं है. लेकिन जो ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो बिना बिल्डिंग कोड को फॉलो किए हुए बने हैं, दे में देयर इज अ चांस. यस सर, एक और चीज, आपने बोला कि सीस्मिक जोन 4 में जब होता है तो जो स्ट्रक्चर इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर नहीं है उन पे कहीं ना कहीं खतरा है. हमने देखा है कि दिल्ली में इलीगल कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हैं. ओ जोन में भी कंस्ट्रक्शन हो रखे हैं, यमुना बेल्ट में कंस्ट्रक्शन हो रखे हैं. कोर्ट्स की कई सारी रूलिंग आई हैं, एनजीटी ने कई बार डांट भी लगाई है, फटकार लगाई है एजेंसियों को, उसके बावजूद यहाँ है. और बहुत डेंस पॉपुलेशन है कई इलाकों में. आप यमुना खादर का इलाका अगर खासकर ईस्ट दिल्ली में अगर आप देखें, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आप देखें, तो ऐसे इलाके हैं जो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड हैं. साथ में ऐसे इलाकों में हैं जहां जो कहते हैं कि अर्थक्वेक के टाइम पे इन इलाकों में ज्यादा खतरा हो सकता है. उसको देखने से आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है राजधानी दिल्ली पे? अगर ऐसे कहीं की कंस्ट्रक्शन पर ध्यान नहीं दिया गया तो प्रॉब्लम हो सकती है. एक्चुअली देखिए, एक फ्रेज है, अर्थक्वेक डोंट किल द पीपल्स, बिल्डिंग्स डू. मतलब कि अगर आप अर्थक्वेक, कोई बड़ा अर्थक्वेक आ जाए किसी स्पार्स एरिया में जहां कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो डजंट अफेक्ट. बट ए स्मॉलर अर्थक्वेक विच इज केम इन द हैवीली पॉपुलेटेड सिटी, तो जो डैमेज होता है वो बिल्डिंग की वजह से होता है. तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वी हैव टू फॉलो द कोड्स टू मेक ए स्ट्रक्चर, तो बेस्ड ऑन द गाइडलाइन जो भी हमारे इस सेस्मिक जोन 4 के लिए दिल्ली में है, प्रिस्क्राइब है. There's a crucial factor to keep in mind: high-rise living, which is becoming increasingly popular and has posed a unique challenge, especially during the earthquakes. Let's dive right in and understand how can you stay safe during an earthquake, especially if you are in a high-rise building. Well, here is a common question that most of my co-workers had after experiencing the recent set of earthquakes from the 23rd floor of a building. Should you stay in or get out of tall buildings during an earthquake? Let's try and understand this. Well, first and foremost, walking or running during an earthquake can be incredibly dangerous. The ground is moving, and even covering as little as about 10 feet increases your risks of injuries. The safest course of action is to take cover. This is your primary defense against falling debris, which is a major source of injury during earthquakes. Remember the 3 crucial steps: drop, cover, and hold on. First, drop down to your hands and knees to avoid falling. Then take a cover under a sturdy table or a desk to protect yourself from falling objects. Hold on to your shelter or your head and neck until the shaking stops. Be prepared to move with your shelter if necessary, which means lifting the table or the piece of furniture to protect your head in case of need. Always remember, do not run outside or stand in a doorway. It's safer under a table always. The doorways aren't any more stronger. And if you are in a high-rise building trapped, move away from the windows and outside walls. Stay inside and never use elevators. Most importantly, during an earthquake, using the staircase is a big no-no. You should always use stairs only in case a prior warning is given, instead of taking the elevator thinking it'll save time.
Always remember, saving your life is far more important than saving time. In short, Delhi is unique in its placement in that it trembles every 3 to 4 months as well as whenever there is an earthquake in the Himalayan region. And if you find yourself in a tall building during an earthquake, remember to drop, cover and hold on for your safety. Don't risk running or leaving the building unless you've been specifically instructed to do so. For more such insightful content, log on to news18.com or subscribe to CNN News 18. Till then, thanks for watching. Jai Hind.